Western will already cinema. What the great episode. Yeah, you're excellent. ಇದು LDC kavala na J kavala kada confuse dog sta di bala. अपना उन तक है Ah, tapak. ना ओके अब एक साथ दो फाइल किया था J और एक जो LDC UDC NTS का था तो ये दो फाइल है LDC वाला था LDC UDC वाला अब कंफर्म कीजिए था LDC वो समझ हियरिंग ऑफिस में किया था हियरिंग गार्डिंग बोलते हैं ऐसा था आपका जो फॉर्म है में ये furnish the details of sanction order, details appointment order of all the posts of LDC, UDC, वही है MTS. Office of the AC are running whenever. सब This is on 2010. ये इसमें वही कहानी क्या था हम जो ये नहीं किया था इसी में ये इसमें TIA of AC हाँ office में तो ये कहानी क्या था पे चिपिनियर का वहाँ क्या था हाँ ठीक में और क्या बोलते हैं बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होगा ना और वो हैंड बच्चे बिल्कुल नहीं था ये इसको शिपिंग ऑफिस में अप्रोच किया था हाँ कभी हमको साथ दिया है बहुत सारा देने में तो दिया है लेकिन या मतलब इनकम्प्लीट है कहाँ से दिया वो ऐसी से तो तुम नहीं जानते इंजीनियरिंग हियरिंग किया है नहीं किया वो नहीं करके ऐसी जो किया है कागज को तैयारी नहीं करके सितंबर 25 सितंबर से फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर टाइम लैप्स हो गया ना तो चीफ इंजीनियर ना वहाँ में हियरिंग करना पड़ेगा हम बहुत पेपर में गए adalo kuch you want 42 items adalo kuch double होगा yeah adalo कुछ सेम चीज वाला होगा उसमें से हमको रुको हाँ अब तो यूडीसी एंड then किस होगा ना हम लोग का क्या क्या मांगा पानी डिटेल्स सैंक्शन ऑर्डर डिटेल अपॉइंटमेंट ऑर्डर सैंक्शन ऑर्डर तो एक ही अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो furnish photocopy of sanction order furnish photocopy of appointment order furnish photocopy of tele advertisement that was last 15 years furnish the copy of notification ऐसा करके बहुत आइटम का मांगा है ना डिटेल्स नहीं प्राइस furnish name and phone number tell waiting list how many persons get surrendered for this how many persons had appointed those post surrender received this furnish photocopy of department furnish copy of current salary payment details furnish copy of eligibility criteria details of board members CD CC pictures Babas sponsorship sponsorship तो नहीं देगा furnish photocopy of notification of interview furnish copy of MLA ministry and MLA administration roll number and property generation education qualification of all sorts of people. How many persons are there? It's got like 42 items. Details of board. Copy of name of the station for many persons. Copy of name of list of on interview board, training report,
what examination, each person, the responsibility of each person, protection, equipment, equipment system, efficiency. Automated establishment तरफ लोगों भी तो बहुत तरह बड़ा है वो तो बहुत होगा last 15 years का तो ये टीपीने का अप्रोच किया था बस डेटा हाँ क्या क्या बोला नहीं उन लोग उसको रिसीव किया हाँ तो रिसीव करके रिसीव तो किया है ना एसी को प्रमोट किया क्या एसी को कागज देने के लिए बोला तब एसी ने क्या कर दे दिया है तो मालूम तो नहीं है ना तो नहीं नहीं फर्स्ट के लिए तो नहीं लिखा है लिखा तो चला रहा तो देखो तो फर्स्ट के लिए तो सकती नहीं है मैंने ये जो टीपीने को नहीं किया ना नहीं किया कितने ऑफिस में किया थी की है जो अदरवाइज जो एसी को भी करना था वो तो एसी रास्ता न्याय को एप्लीकेशन दिया है तो ना तो दोनों एक पैसा से नेक्स्ट हायर ऑफिसर वो भी वैलिड है वो तो एसी है अदरवाइज टीपीने तो वो उन्होंने प्रदेश व्यक्ति प्रोसीड्यूर रूल में तो डिजाइनेशन दिया है तो ना टीपीने को उधर में हियरिंग करने के लिए हम ऑर्डर करेंगे सर हियरिंग फिर सर रिमन रिमन दिल्ली हो जाएगी रिमन रिमन यहाँ में फिर पूरा जिले में कैसे फिर यहाँ में फिर उधर फिर इनकम टैक्स पे आएगा ओके उन लोग को और चीफ इंजीनियर और हियरिंग हम एक टाइम फ्रेम देगा ना विदिन 2 वीक्स में करना 2 वीक्स में अगर नहीं करता है तो आप यहाँ बहुत आ सकते हैं तो समय हो ई का हम एग्जाम कर देगा 50 रुपीज देता है और वो जो जजमेंट दिया है उसका एगेंस्ट में अगर एग्री है नॉट सेटिस्फाइड तब हो सकता है और मैंडेटरी है बस अप्लाई कर सकती है हियरिंग का जो अगर इसमें कुछ हियरिंग करके तो उसको हियरिंग नहीं किया बोल के हमें आया था ना एगेंस्ट बस एप्लीकेट होता है अगर से इनकम टैक्स दिया वो क्या पाएगा नहीं वो तो आप पहले पास एप्लीकेट अथॉरिटी में किया है ना बस एप्लीकेट अथॉरिटी हियरिंग किया ही नहीं मैंडेटरी है वहाँ पे हियरिंग करना और सिर्फ अथॉरिटी करने का बाद ही तब उसको कागज दिया था बस एप्लीकेट अथॉरिटी हियरिंग किया था नहीं किया नहीं तो वो हियरिंग उनके हियरिंग करना पड़ेगा आपका केस तो पास एप्लीकेट अथॉरिटी का उन्होंने पेंडिंग है ना इधर वो हियरिंग करेगा नहीं करेगा एक तो जजमेंट देना पड़ेगा रिजेक्ट करेगा ये कोर्ट में आरटीआई ये जो कमीशन में लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 years से हम लोग वही फर्स्ट एप्लीकेट अथॉरिटी को मैंडेटरी हियरिंग करने के लिए अदरवाइज और रूल में ऑलरेडी था पहले तो आरटीआई एप्लीकेशन कमेटी का होगा यहाँ में बहुत लोग इन्फॉर्मेशन कमीशन लोग सबको इंटरटेन करता था तो अभी बहुत फ्लडेड बाई आरटीआई एप्लीकेशंस सो फर्स्ट एप्लीकेशन अथॉरिटी को हम लोग कंपलसरी हियरिंग करने के लिए मैंडेटरी मेरा कोर्ट में सिर्फ नहीं है बाकी कोर्ट में आपको टाइम 2 weeks टाइम दे देते हैं तो यहाँ होने से वहाँ होने से वहाँ तो अपना ऑफिस में यहाँ में यहाँ खड़ा करके अननेसेसरी क्या खड़ा सर वो मेरा सोच वही था कि इनकम टैक्स हमको दिया है तो ठीक है आप उसमें बात सीरियल नंबर में जो इनकम टैक्स बना हो उसको आप उनमें पास करके उन लोग देने से ये लोग ऐसा इसमें हम लोग कॉन्टेस्ट नहीं करते हैं हम लोग कॉन्टेस्ट करेगा फर्स्ट पहले तो अथॉरिटी का अगेंस्ट में यहाँ आया ना तो हियरिंग नहीं किया बोलते तो आया तो उसको हियरिंग तो हियरिंग करके अब तो हियरिंग के बाद में if you are satisfied you will not come back here if you are unsatisfied for any reason कि वो हियरिंग का टाइमली नहीं किया
और हमने अप्रोच किया है उसके साथ में और वो हियरिंग करके एक ऑर्डर पास किया है हाँ ऑर्डर अगर डिफेक्टिव है वी आर नॉट सेटिस्फाइड इसके अगेंस्ट में अपने आ सकता है तो सर हम आपके करने से फिर से हम फॉर्म फिलअप करना है ना यहाँ से नहीं हो नहीं जाएगा ये उसका अगेंस्ट में आ, आ, इसमें कैसे भी होगा सब कुछ देखना होगा हाँ फॉर्म में आने से भी हाँ उसमें सिक्योरिटी देता है ठीक है उसको हाँ हम देता है एग्जाम्पशन करते हाँ हैं इसको देने का जरूरत नहीं ठीक है और प्लीज लेना हो जाएगा है ठीक ये उधर उधर समझ गया तो एक अच्छा तो ना उस टाइम देर ना भैया आज ऑर्डर मिल जाएगा ठीक ऑर्डर है लेके ठीक जाइए है ठीक है हम लोग का कॉपी भी लेके जाइए हाँ हाँ व्हाट्सएप में भेज दीजिए इस बात में उसको उनको कॉन्टेक्ट रख लीजिए कॉन्टेक्ट लेकिन नहीं आप लेके वो बस अपने अपन को कोई सोचा नहीं चाहिए बता रहे हाँ चंडीगढ़ में है तो हाँ करने नहीं है डिस्ट्रिक्ट नॉलेज है तो हाँ ठीक 718 783 Kanya Office of Director RD Tanaga ni Bulletsin Tigo Etsin Basically Hassel then Etsin अभी तो कुछ नहीं हुआ है name Etsin अभी रिमेंट करना बस पिला तो कौन था Director RD क्योंकि नजदीक वाला है तो केंद्र में रखा है वहीं को समझ गया ना ऑर्डर को लेकर 2 weeks टाइम एंड unsatisfactory the exemption exempted Kanya versus officer director the तीनों को अटेम्प्ट करके रिमाइंड करना Next 727 working is a PIO Executive Engineer Power Lini ऑनलाइन में था क्या ये है जो documents show power का ये अपन PI है हाँ ये चिकन का है फिल्म आ रहा है बोला रास्ता में ना वो आ रहा है वालों को तो wait नहीं चले अभी अब अब सुन can you hear me hello Yes, sir. Yes, sir Honorable Commissioner, sir. ah you are a PIO here are you Yes, the sir. PIO Yes, sir. yes sir yes uh, the applicant has not come you have not furnished the information furnish नहीं किया था Yes, sir. yes sir सुना देता है can you hear me am I Yes, audible sir. yes sir the application was filed on 25 March 2025 in your office it's Yes. almost 10 months why this thing is not furnished information Actually, से आने नहीं चाहिए yes, sir. आपको वाइट क्लियर आ रही है थोड़ा साउंड कम है ऑडियो क्लियर है क्या ये विदाउट वीडियो नहीं नहीं विदाउट वीडियो ऑडियो क्लियर है क्या ऑडियो ऑडियो से
और वीडियो में सुनाई नहीं देते, ऑडियो से बात कर लें मोबाइल में। Yes, sir. It is audible, हाँ, sir. ऑडियो ना। Yes, sir. The appellant has not come. You have not furnished information, and your past appellate authority has not heard the case. Yes, sir. सुनाई दे रहा है? Yes, sir. सुनाई दे रहा है, sir. क्या रेस्पॉन्स है इसमें? Sir, may I speak, sir? क्लियर है? Okay. आपने एप्लीकेशन ये आरटीआई एप्लीकेशन 25 मार्च 2035 में आपको ऑफिस में फाइल किया है, और पास एफिलिएट अथॉरिटी को वहां में 14 मई को फाइल किया है। दोनों साइड से रेस्पॉन्स नहीं है, इसलिए यहाँ में कमीशन में ये आया है। एपिलेंट आज प्रेजेंट नहीं है, आपको कुछ बोलना है? Actually, sir, it has not been brought to my notice, sir. That's why I could not provide the information in time. जो also जो WT BM से just as surprised to know that such and such Srimati Dopi Miso one RT application has been filed in your court, sir. लाइट नहीं चलेगी। सेकेंड अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल उसको अभी उनके स्टेटमेंट को लिख लो ना, उनका नॉलेज में नहीं आ रहा। आज ये हियरिंग नोटिस का बाद ही पता चला मुझे, कम टू नो अबाउट एक तो ये कुछ लिखा है तो रिगार्डिंग रीडायरेक्ट रहते हैं, इसको आपने पॉइंट आउट करो बोला था, कुछ नहीं किया। प्लीज फाइंड योर ओरिजिनल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन is redirected due to non-submission of e-channel. The same may please be processed again e-channel payment. e-channel नहीं दिया बोल के वो केस को डिस्पोज करना था, तो e-channel नहीं दिया है, इसलिए ये ग्लोबल के पास सेपरेट करके लिखा हुआ है। सेपरेट करके कितना किया बोला डायरेक्ट दिया, लेकिन उसको e-channel आ गया होगा। e-channel आने से किसी को e-channel यू गया था पास इसको से प्राइमरी रिमांड है, इसको एक मेंशन कर देना। ये लिखा हुआ है, ई चलन नहीं होने से भी वो जो मैनुअल चलन में किसी तो वो यानी करना चाहिए। तुमने पावर लोकेशन इस अंदर में वो आगे, वो अभी फिर आ रहे थे, अभी सुना दे रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, ओके। ये आपका चीफ इंजीनियर ऑफिस में हम ऊपर ये करेगा, रिमांड करेगा चीफ इंजीनियर ईस्टर्न जोन इलेक्ट्रिकल, हाँ सर। और जो पास्ट एफिलिएट अथॉरिटी है वहां में हियरिंग अटेंड कीजिए, होगा? ओके सर। आई एम गिविंग 2 weeks टाइम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। You can exit. That's 7:30. Bismillah po. Yaya office submission baik ko ini kenal lagal. Saya
प्रेसिडेंट देखिए क्या नाम था पीआईओ है नेशनल नेशनल हेल्थ मिशन क्या नाम है डॉक्टर दिमोंग डायरेक्टर अभी कौन है मार्केस हो रहा ना दो मार्गे है ना सर एक डीसी आनी नहीं है क्या मार्केस हो रहा था फर्स्ट से लेकर हम लोग ऑफिस कहाँ में है नालगों में हाँ जून 2025 में फाइल किया था देन फर्स्ट एफिलिएट डायरेक्टर को किया होगा ओके मैनेजिंग डायरेक्टर अगस्त को किया है furnish through copy of the work order with name of work which is executed in 2022 under the program office. Following of regarding work orders of all the program. Specify नहीं किए थे स्पेसिफिकली है सर all program बोलने से क्या क्या program होता है all programs बोलने से generally it means जो NSM में state headquarters में NSM there are around 27 programs. Then program actually practically runs in the district. So 27 districts program चलता है. So वो imagine 27 तो district program हाँ program कितने program है बोले around 27 programs. program भी 27 है district भी 27 है हाँ वो इसमें फिर ये लोग का सर एक नया नया प्रोग्राम आता है हाँ तो किसे coincide हो गया कौन सा ये तो all program बोला इसलिए हम बोले तो किसी program को all होने से तो एक program क्वार्टर बोलने से state headquarters का होता है. इसमें सर वो है ये लोग का नोडल ऑफिसर होता है जैसे कि हाँ। आप एक नोडल ऑफिसर वो 3, 4, 10 प्रोग्राम भी आपका अंदर में चार्ज ले सकते हैं आपका अंदर में ही कंट्रोल लेवल वो कर सकते हैं हाँ मैं आपका जो इन्फॉर्मेशन मांगने का ये जो अभी का जो है all program का all program ये टाइम लिमिट दिया है कि आपका फॉर्म में लिखा होगा पीरियड और सिर्फ 2025 का है दे सकते हैं मैंने हम लोग भी सर एप्लेन है मैंने हम लोग का जो हम लोग भी रेगुलर यहाँ पे आते रहता है ना हम लोग का इस पे मैंने कोई होता है इधर उधर ये सब तो मैंने दे ही सकने वाला चीज है ताकि इसमें प्रोग्राम बोल के भी मैंने वो उधर तो काउंटेबल ही है वो नहीं ये पता नहीं भाई एनएचएम में तो कैसा होता होगा लेकिन जैसे कि वर्क डिपार्टमेंट को आप और प्रोग्राम बोलने से बहुत हो जाता है तो वहाँ तो ये इसमें यानी क्या सोचो बस जो एमडी जो आपको हियरिंग नहीं किया फर्स्ट किया था क्लोज किया है सर और भी बताया तो ये तो भी बहुत बार हम बोला है कि लिस्ट कर दीजिए छोटा सा डॉक्यूमेंट है ना कोई होता है देने लायक नहीं होता है ये तो मैंने हम भी देखना चाहते और मैंने सर आप लोग को भी ये एक हम वही बोलेगा कि हम लोग जो स्पेसिफिक बोलते हैं जैसे कि हम लोग ऑल डिपार्टमेंट से जब वो कदर मांग गया तभी तो हम लोग हम बेनिफिट नहीं बोलता है ये आपका एक्ट बोल रहे हैं एक एक्ट जो है वो जो एक्ट में लिखा है उसको ये लोग पीआईओ लोग बहुत लोग एवार नहीं जैसे कि ऐसा वाला ऑल प्रोग्राम को क्लिक होने से ना ये पीआईओ लोग अगर रिस्पॉन्ड करता है अंडर सेक्शन ऑफ तो देख सकते हैं अंडर सेक्शन 6 ऑन है कि इसमें द एप्लीकेंट जो स्पेसिफाई करो बोल के जो उन लोग उसको सेक्शन को मेंशन करके उन लोग रेस्पॉन्ड कर सकते हैं ऐसा होने से आप उसको नेम ऑफ वर्क लिख के देना पड़ेगा जैसे कि ये वाला प्रोग्राम था कुछ क्या क्या प्रोग्राम होता है
रिप्रोडक्टिव मतलब मेंटल हेल्थ जैसे सपोज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रोग्राम अंदर में जॉब होती है स्पेसिफिक और प्रोग्राम बोलने से उन लोग कुछ को छुपा भी सकते हैं कुछ को नहीं भी दे सकते मतलब और प्रोग्राम तो तरह बैग हो गया ना अगर इन गुड पेड आउट ये सब दे देता है तो इस ओके नहीं इनके सर नहीं दे पाते मैं हम भी जानते हैं ना वहाँ कितना प्रोग्राम है वो हम मालूम ही हो जाएगा मालूम होता है तो आप उसको स्पेसिफाई को लिख के देने से जैसे सर स्पेसिफिक होने से सर इतना फिर ताकत हो जाएगा वो सेम ही हेयरिंग होगा सेम ही चीज होगा ऑल सर्विसेज का जैसे कि आप और डिपार्टमेंट में लिखने से जैसे कि सर जो करते रहते हैं उसमें जैसे कि एनईसी का और ये जैसे कि ये बोलते हैं ऐसा तो मेंशन कर सकते हैं ना ये पता नहीं उन लोग का कंप्यूटर आगे नहीं इन है लोग का सर एक प्रोग्राम ही है मतलब जैसे कि मैटरनल हेल्थ होगा ना मैटरनल जैसे कि नंबर ऑफिस का वो मैंने बहुत सारा प्रोग्राम फिर चार्ज लेता है तो उसमें जैसे कि हम लोग जो अभी वो उधर मांगता है तो वो उधर तो मैंने कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी को तो मांग रहा हूँ ना कभी कभी होता है कि डीपीआर वो लंबा चौड़ा है और ये वो उधर सर कितना ना अरे जरा 200 300 पीस तो नहीं होगा अरे 20 30 पीस होगा या तो 100 पीस ही होगा वो तो दे सकता है दे सकने वाला और आप लोग आज ये आते ही क्या वो स्पेसिफिक वाला इसलिए तो हम लोग जो पहले आते में तो ऐसे नहीं था आप लोग ही उसको ये पहले जो परमिशन देने वाला आरटीआई एप्लीकेशन बहुत पड़ती था उन लोग तो यहाँ इंटरटेन करते करते यहाँ में इतना ये जमा हो गया जब हम यहाँ टेक ओवर किया है ऑन एंड ऑफ मेरे पास अबाउट 600 केसेस था 600 केसेस में हमको यहाँ में 2 दिन टाइम मिलता है इसमें से एक ही करते हैं हम लोग 5 लोग हैं उसमें रोटेशन आने से और कोई कोई केस 2 साल में रह जाएगा ऐसे ही है ऐसा करके और जो जो प्रोविजन में है उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करेगा आने के साथ साथ ही वो इट इज बेटर फॉर टेक्निकल ऑल्सो जैसे कि अभी यहाँ में ये देखो सब लोग जो आप लोग यहाँ वो जुडिशियल कोर्ट जैसे यहाँ खड़ा होने हम लोग भी ऐसे भी नहीं लगता है हम अभी दिल्ली में दिल्ली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंटर का इंफॉर्मेशन कमीशन में हम इस ऑफिस उन लोग का कोर्ट हियरिंग विटनेस भी किया है ऐसे ये तो ये भी हम कल भी हम लोग यहाँ डिस्कस किया पूरा उसको मॉडिफाई करें वहाँ में कॉन्फ्रेंस टेबल जैसा उस साइड में ये भी तो ना एप्लीकेंट उस साइड में ये भी करना हम लोग तो ये जुडिशियल कोर्ट नहीं है ना हम लोग क्वाजी जुडिशियल है थी मोर और 50% एडमिनिस्ट्रेटिव है 50% जुडिशियल है तो फ्रेंडली मैनर में डिस्कस करना है यहाँ खड़ा कि ये क्रिमिनल जैसा है यहाँ खड़ा करा के वो जो वहाँ देखने के बाद में ठीक है इसलिए आपका ये जो दो एक यहाँ की सुई अब तो आगे है तो हम पूछ सकते हैं ये जो क्यों नहीं दिया बोलती सर इसमें ऐसा है ये जो अभी ऑल प्रोग्राम्स का वो भी हम मतलब प्रोग्राम हिसाब से स्टेट हेडक्वार्टर में जो प्रोग्राम्स है वो नोडल ऑफिसर में चला रहा है जितना नोडल ऑफिसर है वो समझ के हम एक्चुअली सर्कुलेट किया सबको सर्कुलेट किया लेकिन वो आने में देर हो गया अभी तक 6 प्रोग्राम का मेरा पास है हमें देखे ही नहीं। तो बाकी जो है अभी तक दिया नहीं और ये जो इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं डिस्ट्रिक्ट में होता है वो कोडर वहाँ से देता है मैं वो कोटा यहीं से दिया जैसे ये तो वो कोडर तो मांग रहा है तब तो अप्लाई करने का क्या जरूरत है वो कोटा जैसे सिविल वर्क होने से डिस्ट्रिक्ट से भी देने वाला है यहाँ से भी देने वाला है और यहाँ का लोकल जो डॉक्यूमेंट वगैरह है ये यहीं से कैसे देते हैं तो आपको वहाँ देने की जरूरत नहीं है अगर वहाँ से वो कोडर देते हैं तो आप वहाँ में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं मतलब मिक्स अप है क्या सेम प्रोग्राम मतलब ऐसे है सर ये लो ना जैसे कि सर जो इम्यूनाइजेशन का है हाँ कुछ कुछ प्रोग्राम है सर के अंदर में इम्प्लीमेंट हो या तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट वो डिसेंट्रलाइज हो तो उसको आराम से लिख सकता है एक डिसेंट्रलाइज है डिस्ट्रिक्ट से आप मांग सकता है वो उसी में स्पेसिफिकेशन में आ जाता है ना ये हेल्थ में और एजुकेशन में ऐसा बहुत है जैसे कोई कोई लोग डिस्ट्रिक्ट में तो प्रोग्राम को दे देने से वहाँ में डीसी कंट्रोलिंग ऑफिसर हो जाता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी तो फिर डीसी होगा उसको नॉट डायरेक्टर नहीं होगा ऐसा टाइप का मतलब ये हेल्थ और ये एजुकेशन में होता है तो ये सब उनको आइडिया है हम भी तो
हम तो कोई लॉयर नहीं था ना, एडवोकेट नहीं था ना, हम तो गवर्नमेंट से आए। हम तो मालूम तो वो सिस्टम को पता है। ये वो वो स्पेसिफाई इसलिए हम मेंशन किया था, जस्ट प्रोसेस ऑफ नॉलेज। आप दे दिया तो ये नहीं रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एमडी हियरिंग करना चाहिए था, कभी वो से क्या आपको करती है, तो वहाँ पे अक्रॉस द टेबल भी डिस्कस करके दे सकते हैं। तो टर्नओवर में उसको ओनली मैंडेटरीली डिमांड करने के लिए भी प्रीवियस थी प्रोसेस को डिस्कस करो, तो सिस्टम में ही हमें हियरिंग करा लीजिए। वो इस ये तरीके का सर हम लोग जो ऑलरेडी 5-6 मंथ उसमें गुजर गया। सर हम लोग वही हम लोग हमेशा हम लोग जैसे हम लोग वही बोलते हैं वहाँ रिपीटेडली मैंने इग्नोर करते हैं फिर आप लोग वहीं भेजता है मैंने तो मैंने उससे अच्छा तो पहले हम लोग जो हेल्थ बुलाने से पहले किसी को आप लोग रख के एक नोटिस भिजवा देना ना यहाँ में किसी के काम में हाँ, काम रजिस्ट्री से भेजने चाहिए था। वो तो ये लोग यहाँ भेज देना है बीच में उन लोग बस भेज हम लोग यहाँ में रहे फिर आप लोग 2-3 महीना देने के बाद फिर यहाँ वहाँ मतलब तो valid point। ये तो कोई नहीं भेजा था ना। नहीं 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 नहीं, रजिस्ट्री से यहाँ हम लोग का कोर्ट में नहीं आते हैं, बिकॉज जो रजिस्ट्री सेक्रेटरी जैसे रजिस्ट्री है उन लोग का ड्यूटी है, पॉइंट आउट करेगा। बीच में कर रहा था, पहले नहीं कर रहा था, अभी जो डेप्टी सेक्रेटरी एक अभी वो हस्बैंड बीमारी को छुट्टी में है, वो आके सीआई से वापस भेज रहा था, यहाँ में हियरिंग नहीं करके जो ही करो लेके। हम लोग जैसे कि सर कोई कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं हम लोग जो डीसी का वहाँ आ सकते थे हाँ हम लोग आप लोग ऐसे भेजेगा बोल आना जाना करते थे फिर हमें रिस्पॉन्स ही नहीं करते तो उसमें फिर आप लोग यहाँ में लास्ट में फाइल करने से फिर आप लोग वहाँ भेज देते तो ये तो फिर और हम लोग तो बोलते हैं हम लोग यहाँ में एब्सेंट होने से भी क्या हम लोग का तो पॉइंट लिख के दिया है ना जरूरी नहीं है हम लोग एब्सेंट हुआ है बोल के हियरिंग नहीं होना पीआईओ को हम लोग वो किया था सर देखिए ये कागज को तो बस देखना है कि नहीं हम लोग आना जरूरी भी तो नहीं आपसे बोल रहे हैं है कि नहीं हम लोग बहुत सारा लोग ऐसे होता है कि प्लेन नहीं आता है क्या कारण से वो कर रहा है हम लोग का तो ऑलरेडी कोई नहीं लिखा होता है हम लोग को ये नहीं मिला है कि नहीं देखवा में है सब कुछ है पीआईओ का दीजिए ना, नहीं तो वैसा फिर कागज खुद पे भी रख देता है। और हम लोग तो कोई कोई तो पीआईओ को बार बार टेक्स्ट भी करते हैं साहब उसका ये है दे दीजिए उसका बावजूद भी नहीं देता फिर लास्ट में आप लोग का यहाँ आप पहले बोला जैसे हियरिंग कोर्ट रूम होता है कुछ भी 1 साल भी लग जाता है छोटा सा हियरिंग के लिए अभी और अपने कोर्ट में होना है, और नहीं खाता है। ठीक है, तो चुप। ये तो सर हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को वही बोलता है जो बेसिक चीज है उसको करता नहीं है बेकर बेकर में फंड लेते हैं 2 weeks टाइम में टाइम देना, वहाँ में और ज्वाइन करा दीजिए। सेम सिमिलर होगा जो ना हम इसको टाइम दे रहे हैं ना, वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दो बोल के हम टाइम नहीं दे रहे। तो वो फर्स्ट एप्लीकेटर तक नहीं आया उसको हम 2 weeks टाइम देगा, वहाँ टाइम मांग रहे सर अभी मेरा क्या है तो आप लोग ऐसे बोले हम तो ऐसे ही बोला हम लोग जून का है 6 मंथ्स हो गया सर आधा साल है तो इसका बावजूद भी आप अभी आपका तरफ से कुछ और नहीं देगा तो क्या फायदा है तो वहाँ में हियरिंग वो बात हो रहा था फिर 1 साल लग जाने से सर हैं। इसके हिसाब से हम लोग को यहाँ में कोर्ट केस आते ही, हम लोग का कोर्ट में जो इन्वेस्ट करते ही इधर नहीं बुला के हम लोग रिमांड कर देना चाहिए। इसलिए सर हम ये तो वही सर्कुलेशन बोल रहे बहुत जल्दी क्लियर पॉइंट्स, बिकॉज हम लोग फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी को बुलाना, हियरिंग कराना, तो बाकी कोर्ट में भी इतना कटता होगा, ये जो विजय तरम का और गामलिन का और ये सब अभी तक तो हम लोग कोई फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी को नहीं बुला रहे थे, हम तो शुरू से किसी भी हो जाता है। हैं जैसे कि आप अभी 2 वीक्स देगा सर फिर वो नहीं देगा उसे तो हम तो वापस आ जाए। हम तो सर इसलिए बोल रहा आप एक उधर ही दे दो 2 वीक्स में हियरिंग देख दो नहीं तो अब ऑलरेडी देख रहा है सर यहाँ में जून का है हाँ, रिमांड 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 भी कर देगा, तो इसमें पनिश को कोर्ट पर तो अगर लिख देगा, तो लेकिन रिमांड
दे दो फर्टली भी देखे अपने दे दे बहुत वो हम चेंजेस डाल देगा तो या को भी पनिश करने को लिख देगा बट केस विल बी रिमाइंडर टू केस वहाँ में पेंडिंग है वहाँ जो बस एप्लीकेटर थी वो नहीं करेगा बोल के कुछ एक ऑर्डर तो देना चाहिए वो तो सर हम बता रहे थे सर हम नेगलेक्ट करता है देखने नहीं करते बोलो वो स्टेटरी अथॉरिटी मतलब थी है वो करेगा वो जैसे कि आप लोग को बता रहे हैं फिर भी सर आप लोग एक ऑर्डर देते हैं वो ये तो मैंने क्या बोलेगा फिर हम एक ही नहीं सर बता रहे हैं आप लोग बोल रहे हैं एक कि आइडिया वहाँ भी आपका है जो वहाँ से मैंने एक आइडिया निकल तो मुझे इश्यू बनेगा कि अगर 3 मंथ रख दिया 6 मंथ रख दिया तो भी हियरिंग करके रिमांड करना वो एक तो तरह जेन्युइन नहीं है जस्टिफाइड नहीं करना है तो इमीडिएटली करना चाहिए ऐसा केसेस वालों को ना हम लोग हियरिंग ही नहीं करते रजिस्ट्री से और लोग वापस नहीं भेजते हैं बीच में तो लोग वापस भेज रहा था तो हम लोग ऐसा केसेस में हियरिंग नहीं बुलाते जब नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हम लोग अपीलेंट और पीआईओ को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को सामोन नहीं करके आते ही रजिस्ट्रेशन डिमांड करते हियरिंग करने की जरूरत नहीं इमीडिएटली भी तो और हम समझ लेता है दिस मतलब ये आइडिया ठीक है ये हम लोग का भी क्विक हो जाएगा और अननेसेसरी बुलाओ ये और हम लोग तो सर हमें सामने भी जैसे कि यहाँ इतने सीनियर ऑफिसर लोग भी आके आप लोग खड़ा कर देता है और हम तो पहले से भी सजेशन था मेरा सर अच्छा से ई फाइल भी होता ना ये सब एक प्रिंट लेके दे देने में वो नहीं है ना और पहले तो ऐसे था कि अननेसेसरी मैंने परेशान करने के लिए ये पीआई पॉइंट इतना मांगता था अभी योर क्या कर लिया है था नहीं बोला यार नहीं आया दोस्त को हाँ वो था ऐसे पीने में तो देखा था लेकिन हम आया नहीं दोस्त तो वो समझ नहीं ये सब पॉइंट है होते भी जैसे कि सर कोई कोई होता है सच में वो हम लोग तो सच में मैंने एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कोई भी सिस्टम में लोग बोल होने से वो चीज को हम लोग वो करता है कोई कोई होता है अननेसेसरी और जो आप लोग स्पेसिफिक रखे हैं हम लोग अच्छा लग रहा है कोई कोई सच में इतना क्लीन करके रखने देने के बाद चलन नहीं पड़ता है जेरोक्स मशीन तो फुट होने तक कोई कोई बताता है हम लोग भी दूर रखता है ना इसलिए वो चीज का आप लोग जो स्पेसिफिक है स्पेसिफिक बोल के अभी जैसे कि हम लोग बहुत अच्छा कितना ना फेज होता है समझ वो तो दे सकता है उसी में तो एक ट्रांसपेरेंसी छुप के रखता है हम लोग इसको हम कर सकते हैं कॉल करके तब आप लोग स्पेसिफिक भी दे भी सकते हैं ना वो भी नहीं करते नेगलेक्ट करके रख देते हैं ठीक है हाँ नहीं कोई ना अभी सर एक लेंथ वैसे भी तो होते ना वोटिंग my sincere apologies. We will finally one urgent paid, na? Moreover, there's one number three. ऑनलाइन जा रहे थे ना Electrical power is not off. अब रिपेंट कर रखे Yeah, I can see anime open December came in the center. वो मैडम में है ना बगल पर है ना तीन आदमी को किया और कौन था ट्रेन हुए यस although actually before going into this matter, I'd like to bring one document on record. Oh. Which is from this coordinate bench only. कौन सा वाला केस था 727 727. तब पीआईओ आया था तो वो तो चला गया PIO
Present नहीं है present. Online. Online. हम ये फोन है ना केवल इसको या पास है वो से तो होना वो वैसा है ये क्या है सर ये एक ऑर्डर है होटल पे देने का सेविंग को करके आज क्या बोला है तो ये मतलब सब चीज में पॉइंट क्या है वही कितना किया जाए तो सेम जो आज यहाँ किया था मतलब पहले किया मेरा ये क्या केस था क्या what do you want to prove I just want to draw some difference regarding this case क्यों बोले सर ये दोनों कनेक्टेड है Villain is different, but your document seek करे सर ये wife and husband दोनों है Villain today as I am telling you today she is the wife of that particular person ये हम ही तो PIO जो है सर इतना दिन होने के बाद में भी अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिया they can post against the so WC policy and the reason for seeking such an information seeking such an information background is that the villain one I given you the order sir that particular person Mr. Yam Nihu he is working as a cable staff in Anini subdivision power department so some trade tests has to be conducted I assume I believe that you would know better than me in that regard so in that trade test they have violated some of the procedures so because of that reason since we have some suspicion of foul play that is the reason we are seeking such kind of information so with regard to that order it has been passed in our favor and there was one clear message the last part of the FERA cautioning the PIO to be more cautious. इस तरह से सर हम लोग वो इंफॉर्मेशन सीख किया था उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसको डालने के बाद में हम लोग और एक मिसेस के नाम से डाला क्योंकि आज यहाँ होता है तो इतना महीना होने के बाद में 25 मार्च को हम लोगों ने फॉर्म एक भर के डाला तो डालने के बाद फिर उन लोगों से जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया फर्स्ट स्पिरिट अथॉरिटी और किस नाम से चीफ इंजीनियर ऑफिसर तो वी हैव सबमिटेड फर्स्ट अपील 17 June 2025 नालसा में हम लोगों ने उसको जमा किया था रिसीव डेट है 22 मई 2025 ये जो तुम लोगों का रजिस्टर में रिसीव तो आई थी जो है 25 इसमें रिपोर्ट इसके बावजूद बीच में हम लोगों को एक नोटिफिकेशन आया कि हम लोग का जो एक आईपी जो बड़ा था जिसको आप जो है ई ग्रास से करके हमको दीजिएगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग रेस्पॉन्ड करके उसको वापस हम लोग ई ग्रास जाके चलान बढ़ा के भेज दिया तो देयर आफ्टर देयर इज नो कम्युनिकेशन so acidity period जो पार हो चुका है so there is the reason we are recording some report and since no such response is being given by the PIO first hearing that the walking for Popular Courtman in second term is of third hearing is second to them. commission while in relation submission to the commission to
where is the person? ये तो लॉन्ग ड्रॉन केस होगा ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो in your because you are late the PI was present online he has categorically stated that he is not aware of this RTI application Since they have received copy we have obtained from PI. so how can he deny? You should have contested when he was present here. No more. So he has stated that statement he has given because our hearing is online. Anybody can replay also. Of course, that we recorded. Number one. Number two, that he has admitted that PIO, that first affiliate authority has not heard the case. Yes. As a first authority. But there was some development. So that you also Yes, we have moved on to that one. However, without conducting the hearing, they have done they have forwarded the same letter to this particular PIO. that I've seen. That is not the procedure. In any case, he has to it is statutory duty to dispose of the first It is part of the first first So by forwarding that letter itself, it shows their action. Since a wrong procedure, they are taking it as a some office number office procedure work. But that is a court. You should have disposed of it. Firstly, Honorable Sir, I would like to bring it on record the Form A itself, which they have received. So they were very much aware. What is the because he has categorically stated that he was not aware of this application. Form A received it is against you. 25 March department just clearly. So इसको 25 March. स्टेटमेंट लिख लीजिए हाँ पहले तो ये नहीं है करना So my humble prayers is ये kindly be allowed. कॉपी दे रखी Online next reading up. पूरा चेक Sir, my humble prayer would be since I have already informed Kevin sir this morning that I have urgent matters regarding the bail file. So I requested to pass on the matter for them time. At least for the last item. So on the midway of it, near Papunala, there's a heavy traffic jam. So Fashion Bali was organizing organized by this delivery party. So this was the reason that I could not reach on time. So I was also serially mandatorily to work serially that for time pass only this NRSM PIO was here we just we're discussing otherwise long we had to close that before you arrive. So if someone has difficulty, then But I'm entertaining you. Otherwise, I will not entertain you. So, what you have contested in the absentia of the PIO, because we have already recorded the PIO has categorically stated that he is not aware of this case. After getting the hearing notice, only he come to know about it. So, you could not punish the information. He has said. Now, you record continue. The letter, this council of learned council of the then joined, and he has produced a copy of Form A, which is received by the office of the PIO. All that done. But today's contest is not on whether you have received it or not, or whether you have furnished or information or not. Today's contest is on whether first appellate authority has disposed of the case or not. What he have done. So we have seen that he has forwarded the application to the PIO. That is, he cannot
forward the what case you have filed there, against whom you have filed, to that person he cannot forward it to them. Yes. So that itself is wrong. So we have decided that we will not tell the PI that within 2 weeks, first appellate authority should hear and dispose of. So in this matter, so that will be the orders. Then as for the statutory period of the appellate authority, It was already has over. already been expired. So I believe on good faith that this is the right forum to seek our justice. It's correct. But mandatorily, we are remanding all the cases in which the first appellate authority has not taken any action. I mean, any valid action. So we are giving them a chance. So It's been more than 8 months. Now we know that. So this would cause another harassment to the appellant. I think that persuasion is always there. Your previous case was also similar things. Otherwise, even if we admit here also, this will again linger for another next 2 years. Because we have one courtroom, and we have 5 commission, and we have thousands of cases. And in rotation, I get 52 weeks in the year. After vacation, this, that. Hardly we get time, 2 weeks, 2 times a week. So 52 cases I'll dispose of, then hundreds of cases. That is where we have taken the first appellate authority to the task. It will harm. Matter of 2 weeks. So within 2 weeks, if he doesn't dispose of, or if the system order, you are not satisfied with the order of the first appellate authority, or if he doesn't get implemented his order, you can come back here. And when you come back, your 50 rupees that he will be exempted in the order itself. That it should not too much. I believe as per the law, if you are a local person, you know better than me. This is a quasi judicial. Yes. So here you don't have to stand up in the law. It's somebody immediately there. It's not like that. It should be even very friendly. In the first appellate authority across the table, you can discuss whether you give or not. Once it comes here. No, if I would have filed this, then your filing is your filing here is not against the PIO. It is filed against the first appellate authority, right? Yes. So first appellate authority का against में file किया है. So basic ground is same. Basic ground is same, right? Basic ground is same. But I have failed to furnish the documents. So within the clear saying. It is our discussion to you can we have been doing it for the last 1.5 years. No, it should not take much time because in the last previous record I shown it to you. That is why I was it was disposed of within 2 months. That is what I was saying. Whether this was first hearing or second hearing or third hearing. That is what I was doing. No. So if he had order given an order in the first hearing, so because we all 5 commissioners in our court we are uniformly following it. Mandatory to this thing. Remand to the first appellate authority for the first time we giving the chances. This we are not anything. Because this today I have 4 cases, all 4 cases are like that. All is like since the statutory period has expired. That is one reason that he has not performed his statutory duty also. So we have to take him to the task. That we have been doing it for us. On earlier occasion, for the Hon'Ble Sir Shri Gamboo, I prayed. One observation may be given in my order regarding consideration of that hearing and the first appellate authority. So I feel that this portion of my prayer was not reflected. Here, this is for first hearing. This is mandatorily we are remanding. It is not accepting case in all cases.
Not a single case where we have accepted. Here only one point we can think of is that PIO, part appellate authority has forwarded it to the With the direction. uh, to the PIO. PIO. So he still he has not disposed of the case filed in that office by your client. So in any case, he has to dispose of. By the conduct of the PIO, it itself reflects how he is behaving. That is why we are taking the perception authority when you are giving an order or you are giving personal information to the PIO. You should have implemented it. I think it responsible person. He was confused. What was the forwarding letter? Actually, procedurally, he should have not forwarded it. First of all, that is the case. He should have issued someone letter, I mean, hearing notice to the PIO and the appellant. He could have heard and disposed of the case. He hasn't disposed of the case as yet. After giving direction also, it is not disposed of. But since the forwarding letter itself carry the side, That is why after dispose of, he should dispose of. I have he written that with this direction, the appellate disposed from his end. He has done. He has not. There is no adjudication. It is simply official forwarding. Routine specific direction. When Has someone has he disposed of? Has he implemented that direction? no, Then and that is the reason I am saying that he is irresponsible. that is why we have to give him chance. You should dispose of. That would harm my client because we are pursuing this. This is you are tell your client. This is not an exceptional cases. So far, last 1.5 years since this term of the commission is taken over, we have been doing it. This, in fact, we have introduced. In fact, I have initiated it because I was PIO for 18 years and first appellate authority for 12 years. So we've been doing it. So why not other facilitators not doing it? Also, you are a responsible person. That is the reason you are doing it. That is why first appellate authority we are taking them seriously in the matter. Next time when we are conducting awareness, you can join and raise this question. Because after pending of in the commission 6 months, 3 months, again remand is not. Truly speaking, it is not justified. Now, like, So, but then condition prevailing in our cases, like we have only one courtroom, we have 5 commissions, we are sharing it for once a week. So, how many cases will file up? Like that. yeah, so That is why we are taking the first appellate authority to the task. but, That way, it is previous record shows that it was of improvements. previous record to previous commission to we should not condemn them also. They have been inviting this thing appellate उनका पास अपील करके आओ बोल के और हियरिंग आफ्टर हियरिंग कर दो कितना 13 टाइम 14 टाइम एक केस को हियरिंग करते वी आर नॉट डूइंग इट ये तो आपका 2 weeks maybe within 1.5 months this case will be disposed of. because I was not given this thing, to pronounce the judgment in your in presence of yeah. But what he has stated, you are contradicting that. So that we are going to bring to them. तो लिख लो हाँ ये तो प्रोटेस्ट किया तो पहले तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था I'm afraid, you know, if this situation occurs, only a person, a common man, who are to be benefited with this article, they rather suffer. They'll not suffer. Because you are advocate, so that is why you are going through so many mental harassment in such kind of period of 8 months, more than 8 months. Now they are again given to the cross appellate authority. This is actually this registry of our court registry should have not given these cases to the judges. Immediately they should have
return to the PIA possibility. Now, my We humble have been in between. We have been doing it. prayer would be, since this matter has come up to this forum, we've kindly disposal. No, here we are not. We are not. In no case we have been. For last 1.5 years, we are doing it. So many cases we have done. Today itself is out of 4 cases, 3 is similar, including yours. 4 is all 4 is. So, Only ground that had this first appellate authority had issued the hearing notice and heard the case and given direction. Even then, some of our colleagues are insisting that first appellate authority should get it implemented in order before coming to that. In fact, it is there in the at the you can read it not only in the at the act, but on the act that rule them. That rule them, I think paragraph 39 also. Guidelines to the first appellate authority. Even if they don't implement PIO, disciplinary actions. So, to the notice of disciplinary action, you can take action on the PIO. No guidelines are there. So earlier, we have in the commission, we have not been thorough about all those things. You see, pass order, particular letter. So we are doing it based on the at the act or on the rule framed order act. We are implementing it, not we are doing it on our own whims and fancy. since in that case, my submission may be recorded. My humble prayer would be, Now, what do you want to say? if this appellate authority is sending it back to the first appellate authority, then kindly one strong observation may be given. Like That in such cases where the first appellate authority receives an appeal, they should dispose of it within the time given frame as per CCTV period, and that is asked me. And second point, that if the hearing is not conducted by the first appellate authority, being the responsible person, they should face some consequences. At least some disciplinary action may be initiated against them also. Otherwise, that is otherwise, what we are also looking for. Otherwise, But that is silent in the act or the rule. If you find anything, suggest us. Okay. If there is anything, that is what we are also desperately looking for from this commission. So Gujarat, some amendment commission, RTI commission in Gujarat, they have framed their own this thing, implementation guidelines, which was even done by the court, because that will be that you as a commission cannot frame. Court will not frame implement the rule. The division court also. So that is what we are also thinking. If it is to be implemented, it is to be amended. That is to be passed by the parliament first. Then from parliament only they to come down to. No. State legislature can also frame their rules as per the no, RTA. rule to legislature will not frame the rule. Government will frame the rule on the subordinate. You know it, subordinate legislature. They are not the state legislature. They are the subordinate legislature and executives. So they will frame the rule. So that is what I'm saying. If based on the because basic structure they cannot change it. So if in the act, if there is any indication that first authority should be given punishment or something penalty should be there, we will draw from there and frame the rule. So that is the work of this administrative reform department of government of Arunachal Pradesh, state government. So that is again not commission will frame the rule. No. So far, whatever procedure is there. But my submission is, I humbly request kindly just listen to more clear first. Since I am a very good appellant, so I have a lot of things to say. So you want to get your argument very clear. Yes. What you have said. Yes. My prayer would be whether to consider or not, it is up to you.
But my humble submission and prayer would be, difficult to yes, you one counselors or with some action uh, should be there on the possibility authority or yes, not if he violates the authority to protect the holding of the tree. so observation that is only but you argument it's argument possible. But it may be kindly considered, sir, because if otherwise, that would send the wrong message, as I earlier stated. In the receiving end will be the affiliate only. And lots of affiliates are there today. I'm not talking about other some RT activities was only with running only for some benefits. I'm not talking to them. But the genuine persons, those genuine persons, such as my affiliate, those who are suffering, they are facing very, very hardship in their life. It's not Now always. she's coming all the way from Anini. It is not always like that. You see, even if your case, let me see one thing. Check out. So all the way from How how sincere are these affiliates? How's your counsel? You could also study it. yes, Let me check out here. Whether this affiliate because this is just yes, I'm trying to check. I take application filed before on 25 March. First affiliate letter May 25 March. April, years of the two. It is a statutory period for the disposal of deposit is 30 days. After 30 days, that appellant can still wait for another 90 days. It is there in the rule. So there are here it is little union also up to 2 weeks, 2 months he is waited. yes, In other cases, what you have said is many appellants will suffer. There are many appellants who is waiting for that 30 days. When are the application first 30 days, next day they are filing to the first appeal. Then first appeal, from first appeal to they can wait for 90 days. See, they are in the room. They don't wait for 90 days. They just 30 days they come. That shows their willingness to drag the PIO and all those things to in this commission office. That is because it's a matter of fact that can be understood by any common person also. But that they are not those who are not you cannot generate all applicants are being harassed. But you cannot generate. no, There are many cases which are that is what such kind of appellant with whom I am representing. They are the genuine ones. yeah, that is why you cannot drag you cannot generalize all the applicants will be harassed and this that because we have to see both the sides. Yes. So as a concept you should study that also. It will be based on the fact. Yeah, fact Inspiration of the cases. So, however, in my case, that this observation genuine was put person, in. this That genuine observation person, was put in. so by sending back it to the first appellate authority, you harm her again. So, therefore, my humble prayer is, and it may be taken up on this program. Come up with this in the course of court hearing. I come across that you can do area with this delay in this commission or remand. So next time we may not summon for issuing the hearing notice to the appellant and the PO. Simply without hearing the day we receive in the court in my chair from registry. Because the registry it is their duty to endorse cases to any one of the commission. From my cell to will not take time. So, it will have been much. ऐसा कर I think that duty से जो आने वाला को जो लोग फर्स्ट हियरिंग नहीं किया है फर्स्ट एप्लीकेशन कुछ भी नहीं किया है आते ही विदाउट हियरिंग को रिमांड यानी से करके इधर को रिमांड विदाउट हियरिंग चल नहीं लगा तो हम लोग को हमने भी पेंडिंग भी नहीं रहेगा ओके एनीथिंग